Dear students, let us today solve a few problems on the topic vector which we have learned till now. So, first we will solve how to find the magnitude of a vector. Already in the theory it is discussed, so let us straight away calculate it, or you can just see the brief how it is done. कि if suppose a vector A is given in the form of A I cap plus B j cap plus C k cap, then the magnitude of the vector A is given by root under of A square plus B square plus C square. Okay. So let us take one example. If I say कि a vector A is equal to 2i cap minus 3j cap plus k cap, and the question is find magnitude of A. So we will write it कि mod A is equal to root under of, ये बेटा देखो A है, ये B है, ये C है, C की जगह पे 1 है. So it is equal to 2 square plus minus 3 square is same as 3 square. So we can straight away write it as 3 square plus coefficient of k is 1. So it is 1 square. So it is 4 and 9, that is 13. 13 plus 1, 14. So root 14 is the magnitude of this vector. Clear? Let us take another example. If P vector is equal to I cap minus j cap, find magnitude of P. मतलब P का magnitude कितना होगा. So in a similar way we can say कि here now the k component is absent. So magnitude of P simply we can write at, this is 1, coefficient of I cap is 1 and coefficient of j cap is minus 1. So we can straight away say it is equal to 1 square plus 1 square and the magnitude is 2 units. So in any case, whenever the vector is represented in this form, the magnitude will be given by this relation. Correct? Now, secondly, suppose I say regarding unit vector. So for unit vector I had told you कि if A is a vector, then its unit vector is given by A cap, which is equal to the vector divided by its magnitude. So to calculate the unit vector we will use this concept. Let us take an example. If I say कि if vector A is equal to I cap plus 2j cap minus k cap, you find A cap. So A cap is the unit vector, its magnitude should be 1. So A cap will be given by the vector A divided by its magnitude. So we can straight away say कि vector A is your I cap plus 2j cap minus k cap. ये vector A हो गया और इसके magnitude से बेटा divide करना है, तो magnitude will be given by coefficient of I cap, that is 1. So 1 square plus 2 square, और यहाँ पे minus 1 है तो minus 1 का square, that is same as 1 square. So we can solve it and write it is I cap plus 2j cap minus k cap. Now this is 4 and 5, 6. So it is root over of 6. So this is the answer to this question. So this is a unit vector. अब तुम थोड़ा सा सोच रहे होगे कि इसका मैग्नीट्यूड 1 कैसे है. मैग्नीट्यूड 1 है बेटा. कैसे है? अगर हमको ए कैप का मॉड निकालना है तो ए कैप का मैग्नीट्यूड क्या होगा. ए कैप का मैग्नीट्यूड जब हम निकालने जाएंगे
तो ये पार्ट वेक्टर है और ये पार्ट खुद मैग्नीट्यूड है, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड करना पड़ेगा माइनस के कैप का मैग्नीट्यूड, एंड दिस पार्ट इज ऑलरेडी इन द टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड. So already I have seen ki what is the magnitude of this. The magnitude of this is root under 1 square, 2 square and 1 square. So it is root 6 by root 6 and that gives you the value as 1. है ना? So though it appears कि हाँ पता नहीं इसका magnitude क्या है, but जब आप इसको solve करोगे तो इसका magnitude 1 के equal ही आएगा. Okay? Let us take another example. ठीक है, इफ अ वेक्टर p मान लो दिया हुआ है, ये i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप है. सो फाइंड इट्स यूनिट वेक्टर. फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ p वेक्टर. करेक्ट. So again we can say कि the unit vector of p vector will be represented by p cap, and it must be the vector p divided by its magnitude. Magnitude simply you can write p also. So now it is equal to I cap plus j cap minus k cap divided by, सबका कोफिशिएंट बेटा 1 1 है, तो I can take it as 1 square plus 1 square plus 1 square, that is root 3. So your answer will be this divided by root 3. So this is the answer to this question. Correct? Let us take another example. If I say कि a force of 5 Newton is acting along positive x axis, है ना. मान लो 5 न्यूटन का फोर्स x एक्सिस की तरफ लग रहा है. क्वेश्चन इज कि रिप्रेजेंट द फोर्स इन वेक्टर फॉर्म. इस फोर्स को बेटा वेक्टर फॉर्म में लिखना है. तो हमको मालूम है कि किसी भी वेक्टर को अगर लिखना है तो वेक्टर के दो पार्ट होंगे, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन, है ना. सो आई कैन राइट द फोर्स इन वेक्टर फॉर्म एज इट्स मैग्नीट्यूड. सो मैग्नीट्यूड इज 5 and positive x axis is represented by a unit vector I cap, so it will be 5 I cap Newton. So this will be the answer to this question. ये इसका आंसर होगा. ठीक है. But now suppose we change it to another question कि a force of 5 Newton is acting in the direction of p वेक्टर. p वेक्टर के डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, where p vector is given by I cap plus j cap. Let us say I cap plus j cap is the p vector. And the question is write the force in vector form. उस फोर्स को हमको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, इन वेक्टर फॉर्म. तो अब क्या बेटा, द फोर्स इज नॉट एक्टिंग along the positive x or y or z axis any form. It is acting in the direction of p vector. So we know कि the unit vector of p, जो कि p वेक्टर का डायरेक्शन दिखाएगा. So unit vector of p vector gives the direction of p वेक्टर. p वेक्टर का डायरेक्शन उसका यूनिट वेक्टर दिखाएगा. तो सबसे पहले हम उस यूनिट वेक्टर को अगर कैलकुलेट कर लें तो p कैप से हम शो करेंगे, एंड p कैप विल बी द वेक्टर p डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. सो वेक्टर p इज i कैप प्लस j कैप, एंड मैग्नीट्यूड के जगह इसका भी कोफिशिएंट 1 है, इसका भी 1 है. सो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, that will give you I cap plus j cap divided by root 2. So now this becomes the unit vector in the direction of vector p, and since the force is acting in the same direction,
So we can say that the force vector will have two parts, magnitude and direction. So magnitude is 5 Newton, for direction it is p cap, but as we know कि p cap को तो कोई समझ नहीं पाएगा, तो p cap is already expressed in terms of I cap and j cap. So I can write the answer, it is 5 times of I cap plus j cap divided by root 2. So we can take the root 2 value here. So this is the force represented in a vector form. और आप इसको ऐसे सोच सकते हो, 5 by root 2 Newton is the component of force in the x direction and 5 by root 2 Newton is also the component of force in the positive y direction. ठीक है, तो हम वेक्टर के हिसाब से इसको हम उस फॉर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, let us say we have another example कि if vector A equal to some 0.4 I cap plus B j cap is a unit vector. क्वेश्चन बोल रहा है कि ये वेक्टर बेटा एक यूनिट वेक्टर है. ऑब्वियसली इट इज नॉट डिनोटेड बाय ए कैप, but it is assumed कि this vector is a unit vector and problem is find the value of b. तो b का वैल्यू कितना होगा, करेक्ट. So we can say कि because this is representing a unit vector, that means कि the magnitude of this vector must be equal to how much, 1 होना चाहिए. और magnitude हम कैसे लिखते हैं, तो we can say root over of 0.4 square plus b square, this must be equal to 1, correct. And if I square this, then we are getting 0.4 square plus b square, that is equal to 1, or we can say it is 0.16 plus b square is equal to 1, or b square will be 1 minus 0.16. clear. और हम इसका जब रूट ले लेंगे तो we can get the value of this as 1 minus 0.16. clear. So जो आएगा that will be the magnitude of b. clear. अब अगर ये b का मैग्नीट्यूड निकल गया, कितना आ जाएगा ये, it is equal to 0.84. So this will be the value. clear है. So the value of b can be written as b must be plus minus root under 0.84. क्यों प्लस माइनस? प्लस माइनस इसलिए क्योंकि अगर हम प्लस में भी वैल्यू दें या माइनस में वैल्यू दें, मैग्नीट्यूड निकालते समय स्क्वायर हो जाएगा, तो इट विल गिव यू द सेम रिजल्ट. So b can either take the positive value of root 0.84 or it can take the negative value of root 0.84, right? So like that we can find out the value for the unit vector. Now next, if we say कि if vector A is equal to sum of 3 unit vectors, let us say I cap, j cap plus k cap, and someone asks you कि is vector A a unit vector? Is vector A is a unit vector? So obviously what you can see कि the sum of 3 unit vectors, that is not a unit vector, reason being if it is a unit vector its magnitude should be 1, but if when we calculate the magnitude of this, it is 1 square plus 1 square plus 1 square and this magnitude is 3. So this is not a unit vector, correct. तो ये यूनिट वेक्टर नहीं है. इसका यूनिट वेक्टर होगा क्या, तो बेटा इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, इसका यूनिट वेक्टर जो होगा वो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. This will be the unit vector for the vector A. Hopefully it is clear to all of you. Okay. So next let us see the other concept which I have taught you regarding the position vector.
ठीक है. सो पोजीशन वेक्टर ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि अगर किसी भी कोऑर्डिनेट एक्सिस अगर हमको नोन है और एक ओरिजिन अगर हमको नोन है, तो अगर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर x, y है, या लेट अस से इन जनरल इट इज x, y, z, if we take the z axis also, then a vector joining from the point O to the point P, that is called, this OP vector is called the position vector, which is also represented by vector r, and that is nothing, the x coordinate written with I cap, the y coordinate written with j cap, and the z coordinate written with k cap. So this becomes the position vector of the point P with respect to the origin. Obviously it is x axis and y axis. So this is the concept we had. So अब हम इससे किसी का भी पोजीशन वेक्टर निकाल लेंगे और उसके लिए हमको सिर्फ एक ओरिजिन पता होना चाहिए, है ना. So for example, if I say कि a particle is located at point P, let us say at point P whose coordinate is 2, -3, 4. Write its position vector. Its position vector with respect to, WRT का मतलब हो गया with respect to origin. तो origin के respect में उसका position vector क्या है. So without any bothering we can just say कि that position vector will be 2i cap. It is plus, you can write in this way, plus it is -3, साथ में कितना आ गया j cap, and plus it is 4 times of k cap, which we can also rewrite as 2i cap -3j cap plus 4k cap. So this becomes the position vector of the point. Okay. Next we can say, let us take another example. If I say कि a particle starting from origin moves 3 units along negative x axis and then 4 units along positive z axis, then write the position vector of the particle, position vector of the particle with respect to the origin. ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, ओरिजिन का मतलब हो गया बेटा स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट के रेस्पेक्ट में उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा. सो ऑब्वियसली व्हाट इज द सिचुएशन कि इफ अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, it is moving 3 unit in the negative x direction. So negative x direction I can take this side. तो इधर की ओर बेटा वो 3 units मूव कर रहे हैं, and then it is moving 4 units in the positive z direction. ठीक है. So positive z direction you can change the coordinate system. हम ऐसे बोल सकते हैं कि let us say this is x axis and this is the z axis. ठीक है. तो हम बोलेंगे कि पहले ये इधर की ओर मूव किया, यहाँ पे देख लो इस चीज को, इधर मूव किया 3 यूनिट और यहाँ से z डायरेक्शन में मूव किया 4 यूनिट्स. सो फाइनली द पार्टिकल इज ओवर हियर. सो विथ रेस्पेक्ट टू द स्टार्टिंग पॉइंट्स दिस विल बिकम द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल. ठीक है. So the coordinate of this point is how much? 3 unit in the negative x direction, so it is -3, and 4 unit in the positive z direction. तो y coordinate 0 है और z coordinate कितना है 4 है. Okay. So we can write down the position vector straight away कि that position vector will be -3 I cap, or you can put in this way 3 in the direction of -I cap and 4 in the direction of
k cap, that is z axis. So this can be written as minus 3 I cap plus 4k cap. Clear hai? Okay. Next, suppose we say कि a particle, और just consider कि there is a triangle. एक मान लो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, और इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का लेंथ दिया हुआ है बेटा L. सो L इज द लेंथ ऑफ दिस ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल. And let us say कि the origin is selected here and this represents the y axis and this represents from the origin the x axis. So here is the origin. So if I consider the point, let us say A and B, the question is to write the position vector of the point B vector of point B and C, points B and C with respect to the origin. origin के respect में ये points के position vectors क्या क्या होंगे? So from the origin if we see, then the coordinate of this point B is nothing, it is x में L है और y coordinate बेटा 0 है. और अगर हम पॉइंट ए की कोऑर्डिनेट्स की बात करें, सो दिस डिस्टेंस इज हाउ मच? दिस डिस्टेंस इज √3 टाइम्स ऑफ L/2. सो वी कैन से कि द एक्स कोऑर्डिनेट यहां से देखेंगे तो L/2 और y कोऑर्डिनेट देखेंगे तो ये √3 L/2 हो जाएगा. ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा ना. दैट यू कैन आल्सो गेट कि दिस एंगल इज 60 डिग्री. So we can say कि perpendicular by this part that is equal to tan 60. तो ये पार्ट अगर B है और ये वाला पार्ट अगर A है तो B by A is tan 60, that is √3. So B will be A times of √3 and A is nothing, L/2. So it is L/2 times of √3. So if we have to write down the position vector of B, let us denote it by RB. So RB is simply L and it is in the x direction, so it is Li cap. And if we write down the position vector of A, then position vector of A, the x coordinate is L/2, so it is L/2 I cap, and the y coordinate is √3 L/2, so that will be written with a j cap sign. Clear? So this is how for any point we can write down the position vector. Okay? Now let us take another concept regarding the angle between two vectors. Angle between two vectors. So इसके रिगार्डिंग बेटा हम लोग पढ़े हैं कि जब भी हमको दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना है तो इट इज द स्मॉलर एंगल दैट इज फॉर्म्ड बिटवीन द टू वेक्टर्स when their heads are either coinciding or their tails are coinciding. ठीक है? तो सपोज करो हमारे पास सिंपल क्वेश्चन है कि लेट अस से कि वी हैव गॉट कि दिस इज अ वेक्टर A that is in the horizontal direction and with the horizontal let us say कि this is another vector B that is making an angle of let us say 120 degree with the horizontal, and the question is find the angle between A and B. तो अब बेटा A और B के बीच का एंगल कितना होगा? So to find the angle between A and B, we can draw both the vectors in such a way कि either their heads are meeting together or their tails are coinciding together. For that what we will do? We can either shift A पैरेलल टू इटसेल्फ और आई कैन शिफ्ट बी पैरेलल टू इटसेल्फ. तुम दोनों से देख लो, क्योंकि किसी भी वेक्टर को अगर हम पैरेलल शिफ्ट कर देंगे तो पैरेलल शिफ्ट करने का मतलब है कि हम एंगल चेंज नहीं कर रहे हैं. एंड इफ आई टेक द सेम लेंथ दैट मीन्स मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं कर रहे हैं.
मतलब कि पूरा का पूरा वेक्टर एज इट इज ड्रॉ हो सकता है। सो वन वे ऑफ सॉल्विंग इज कि अगर हम b को बेटा एज इट इज रख लें, सो विद द हॉरिजॉन्टल b इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, ये एंगल 120 है, हम इसको डिस्टर्ब नहीं किए, और ये b का टेल है। अब तुम देखो a को अगर हम उठा के यहां कर दें तो क्या होगा, a बेटा इधर ड्रॉ हो जाएगा और इससे a के डायरेक्शन में और मैग्नीट्यूड में कोई चेंजेस नहीं, यहां से उठाया नीचे किया, नीचे उठा के इधर शिफ्ट कर दिया, तो देयर इज नो चेंज। नाउ बाय डूइंग दिस व्हाट वी आर गेटिंग कि द एंगल बिटवीन द स्मॉलर एंगल बिटवीन a एंड b इज हाउ मच, 120 डिग्री। सो दिस बिकम्स द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। सो एंगल बिटवीन vector a and b is equal to 120 degree. This is one way of solving it. Other way what we could have done, we will keep a as it is और b को उठा के इस एक्सिस से इतना एंगल में रख देंगे, तो भी a और b का क्या होगा, टेल कॉन्साइड कर जाएगा और एंगल कितना आएगा 120। हम हेड को भी कॉन्साइड करा सकते थे, हेड कैसे कॉन्साइड कराते, सपोज वी वांट टू सी, वी वांट टू मेक देयर हेड्स कॉन्साइड and let us say कि I am taking A as it is और B को suppose करो शिफ्ट करना है, तो A कौन से लाइन पे है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, so this is the direction of vector A. B is making an angle 120 डिग्री, मतलब B बेटा यहां ड्रॉ किया हुआ है ना। अब अगर हम इस B वेक्टर को यहाँ पे टेल टेल कॉन्साइडेड, अगर हम इसके पैरेलल यहां शिफ्ट कर दें सपोज, तो B वेक्टर इसके पैरेलल यहां पहुंच जाएगा, क्लियर। और हमको हेड कॉन्साइड करना है तो इसको पीछे मूव कर देंगे पैरेलली, तो B वेक्टर को हम यहां ला सकते हैं। सो यहां से यहां सोच लो और यहां से पीछे कर दिया, सो दैट शुड बी द एंगल बिटवीन देम। नाउ व्हाट इज द एंगल, सो दिस लाइन A इज ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन, B यहां पे है, ये वाला एंगल कितना था, व्हाट इज दिस एंगल, this is the vector b. So what is this particular angle you have? तो देखो अगर हम इस वेक्टर को पैरेलली पीछे कर देते तो ये वाला एंगल कितना होता, 60 डिग्री। So we know कि this angle is on this straight line, this angle is 60 degree, but the angle between A and B will be this particular angle, and this angle is nothing on a straight line, it will be equal to 120 degree. So we have got the answer as 120 degree. वाइस वर्सा, A को फिक्स करके हम B को चेंज कर सकते थे, B को तो A के ऊपर B को लाके हम यहाँ पे रख देते, then also the result is same. So that you have to keep in mind while finding the angle between any two vectors. Let us take another example to show that. If I say कि suppose along the x axis, मान लो हमारे पास एक वेक्टर है जो हॉरिजॉन्टल के साथ नीचे पॉइंट कर रहा है, और ये वेक्टर इस हॉरिजॉन्टल से बेटा 30 डिग्री पे, ठीक है। एंड लेट अस से कि देयर इज अनदर वेक्टर विद द हॉरिजॉन्टल दैट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री ओवर हियर, एंड द क्वेश्चन इज फाइंड द एंगल बिटवीन A एंड B. सो अब A और B के बीच में एंगल कितना होगा, so simple, this is the line, A को अगर हम as it is draw कर लें, so A is making an angle of 30 degree here. अब अगर हम B के टेल को भी यहां लाके रख दें तो ये लाइन थोड़ा सा अगर हम एक्सटेंड करके देखें तो B को हम इस लाइन से B बेटा कितना एंगल बना रहा है, so the vector B is making an angle of 60 degree over here. I have brought it on this position, ठीक है। So now what is the angle between A and B? So angle can be either this one or from here. So as we have studied, it is the smaller of the angle which we take. So this total angle will be the angle between A and B. Clear? So if we take this total angle, what is this equal to? तो यू कैन वेरी क्लियरली चेक कि ये 60 है तो ये वाला एंगल कितना होगा, 120 डिग्री होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे है, और 120 और ये वाला पार्ट कितना है 30,
तो आई कैन से कि द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज हाउ मच 120 plus 30, that is equal to 150 degree. This is the way we could have done. दूसरा क्या होता, b को एज इट इज रखना है, तुम सोचो b यहीं पे रखा हुआ है और a को हम यहां से उठा के कर दिए तो भी सेम सिचुएशन है. सो दैट विल मेक द एंगल बिटवीन द वेक्टर b एंड वेक्टर a. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, चलो और एक क्वेश्चन से देख लेते हैं. Question is, find the angle between two vectors P and Q such that P vector acts along 30 degree east of north and Q vector acts along 45 degree साउथ ऑफ वेस्ट. इसको साउथ वेस्ट भी बोलते हैं अगर 45 डिग्री का एंगल है तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा. So before we find the angle, just to understand कि if we draw in this way east, west and north and this side is south, ये चार directions हैं. Let us plot this. P is acting along 30 degree east of north, मतलब north से east की तरफ 30 डिग्री है. तो ये वाला जो वेक्टर P होगा ओ ईस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब नॉर्थ ऑफ ईस्ट होता तो हम क्या करते, एंगल इधर से लेते. ठीक है, यहां पे ईस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 30 डिग्री. सो दिस पार्टिकुलर एंगल इज गिवन एज 30 डिग्री. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ पी वेक्टर. लेट अस ड्रॉ द क्यू वेक्टर आल्सो फ्रॉम दिस पॉइंट सो दैट द टेल coincides. So Q is acting along 45 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट. सो दिस इज द वेस्ट और वेस्ट से साउथ की तरफ जाएंगे, साउथ ऑफ वेस्ट, एंड दिस पार्टिकुलर एंगल इज हाउ मच 45 डिग्री एंड दिस इज योर क्यू वेक्टर. ऐसे ड्रॉ हो गया. सो नाउ व्हाट इज द एंगल बिटवीन पी एंड क्यू? अगर इधर से देखेंगे तो इट इज 30 प्लस 90 प्लस 45. सो 30 प्लस 45 दैट इज 75 हो गया और ये 90, दैट इज द एंगल. इधर से देखेंगे तो 60 प्लस 90 प्लस 45, तो 60 प्लस 90 प्लस 45 विल बी अ ग्रेटर एंगल. वी हैव टू टेक द स्मॉलर एंगल. सो द एंगल बिटवीन P and Q is P and Q vector can be given as this 30 plus 90 plus 45 plus 45 degree. क्लियर है? कितना आ जाएगा बेटा? It is 90 plus 75 plus 90 degree. So that is equal to 165 degree. ठीक है? So 165 is the angle between the vector P and Q. साउथ एग्जैक्टली अगर 45 डिग्री होगा तो इसको हम लोग साउथ वेस्ट भी बोल सकते हैं. ठीक है, पर और कोई एंगल होगा तो वी विल बी यूजिंग द वर्ड ईस्ट ऑफ नॉर्थ. जैसे नॉर्थ ईस्ट बोल दिया तो नॉर्थ ईस्ट का मतलब एग्जैक्टली इस लाइन में 45 डिग्री. ठीक है, नॉर्थ वेस्ट इस डायरेक्शन में 45 डिग्री. ठीक है, साउथ ईस्ट सो मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री. साउथ वेस्ट दिस डायरेक्शन, okay, 45 degree. So this is how we will be finding the angle, by just making their tails coincide or making their heads coincide, है ना? And for that we can always shift a vector parallel to itself. Clear? Let's see the problems of another concept, that is resolution of a vector. ठीक है, straight away let us solve the problem. Already I have discussed the theory with you. So if I take example कि suppose there is a vector in the xy plane, मान लो एक वेक्टर है
और इस ये वेक्टर बेटा यहाँ पे 37 डिग्री का एंगल बना रहा है और मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इज 20 यूनिट्स. ठीक है. एंड द क्वेश्चन इज फाइंड द कंपोनेंट्स of vector A along x and y axis. ठीक है. And let us say second problem is कि write vector A in its components form. उसके components के form में लिखो उसको. Right? सो ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द थ्योरी कि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो जब वेक्टर ए का कंपोनेंट एक्स एक्सिस पे निकालना है तो यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप होता है एंड एक्स कंपोनेंट बिकम्स दिस पार्ट विच इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स राइट. दिस इज एक्स कंपोनेंट. और जब वाई कंपोनेंट निकालेंगे तो यहाँ से परपेंडिकुलर हम इस पे ड्रॉ करेंगे. So this component will be y component pointing in the positive y direction. And already studied कि the magnitude of this part is a cos theta. And if it is a cos theta, angle theta है तो जिसके साथ angle बनाएगा वो cos और दूसरा वाला part बन जाएगा sin. Where a is nothing, a is the magnitude of the vector. So what is the component along x axis? So I can say component along x axis, this component is equal to a cos theta magnitude wise. Direction के साथ लिखना है तो I cap. So a is given as 20 and cos theta मतलब cos 37. Remember the value of cos 37 is 4 by 5 and that makes it how much? 16 units. So the component along the x-axis is 16 units. Similarly, if we find the component along y-axis, then we can say that this component is equal to a sin theta. A is 20. Sin 37 is given by 3 by 5. Sorry, ये डाटा बेटा याद रखना, बहुत ऑफेनली फिजिक्स में यूज करेंगे हम लोग. Sin 37 3 by 5, cos 37 4 by 5. और इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आ जाएगा 53 डिग्री. तो जो साइन है वो cos बन जाएगा और cos का वैल्यू sin बन जाएगा. सो दैट इज इक्वल टू 12 यूनिट्स. क्लियर. सो द x component of this vector is 16 and the y component is 12. X component pointing in the positive x direction and y component pointing in the negative x, positive y direction. 16 and 12. So what I can write the answer to the second bit. Vector को लिखना है form में, components form में. तो 16 is along I cap and 12 is along j cap. So this becomes the answer to the second bit. Clear? Okay. Let us take another example. A vector P has its x component 3 units along negative x axis and 4 units along positive y axis. ठीक है. दोनों कंपोनेंट्स दे दिया इसका और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. क्वेश्चन इज कि राइट वेक्टर फॉर्म ऑफ पी. पी का वेक्टर फॉर्म कितना होगा? And secondly, also calculate its magnitude. उसका magnitude भी निकालना है. ठीक है. So what we understand in this question कि the vector has, if I draw the x and y axis,
so the vector is having a component 3 unit along negative x axis. मतलब इस तरफ इसका component बेटा 3 units है और वो इधर point कर रहा होगा, और उस वेक्टर का कंपोनेंट 4 यूनिट है किस डायरेक्शन में, along the positive y डायरेक्शन. मतलब इस डायरेक्शन में ये वाला डिस्टेंस 4 होगा और ये इधर पॉइंट कर रहा होगा. तो ऑब्वियसली अगर ये दोनों इसके कंपोनेंट्स हैं तो उस वेक्टर का जो नेट जो होगा वेक्टर वो कुछ इस फॉर्म में ड्रॉ होगा, such that if I drop a perpendicular then this becomes the y component, and if I drop the perpendicular this becomes the x component. So this is the vector p. ये p वेक्टर होगा बेटा. तो p वेक्टर का अगर हमको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो it is 3 unit along negative x axis, so it is 3 times of minus I cap and 4 times of j cap, which you can also write it as minus 3 I cap plus 4 j cap. Clear? And if we have to write the magnitude of this p vector, so already studied regarding the magnitude. Magnitude is root under 3 square plus 4 square, and that gives you the answer as 5 units. Clear? ये कितने एंगल पे है? So if you want to know this angle as alpha, तो I can also say कि tan alpha is equal to tan alpha from this right angle triangle, this is equal to perpendicular by base, so it is 4 और इसका magnitude 3 है, so it is 4 by 3. So this becomes tan alpha. और अभी हम आपको दो वैल्यूज बताए थे, sin 37 3/5, cos 37, ये वैल्यूज हम लिख भी दे रहे हैं. देखो sin 37 होता है बेटा 3/5, cos 37 होता है 4/5. तो tan 37 का जो वैल्यू आएगा वो sin बाई cos आएगा, मतलब 3/4. और इसी का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं 53. तो sin 53 का जो वैल्यू होगा वो ये वाला होगा, cos 53 का वैल्यू 3/5 होगा. तो tan 53 जब हम निकालेंगे तो ये sin बन जाएगा, ये cos, मतलब कि डिवाइड करेंगे तो 4/3. What I mean to say कि if tan alpha is 4/3, that implies alpha is equal to 53 degree. So that is the angle which it makes with negative x-axis. With negative x-axis. So we can tell the direction of that vector also looking at this. Clear है? ठीक है? Let us take another example. A vector P is inclined at an angle 30 degree with positive x-axis. ठीक है? In the xy plane. मतलब वो वेक्टर बेटा xy प्लेन में लाई कर रहा है और 30 डिग्री एंगल बना रहा है with the positive x-axis. Clear? The question is find the magnitude of the vector of p vector and its y component. उसका y component कितना होगा? Okay. So if we draw this, so with the x-axis, question clear है? 30 degree angle with the positive x-axis. So this is the direction of positive x-axis and this is making an angle of 30 degree. थोड़ा एंगल्स के लिए याद रखोगे कि एंगल को हम पॉजिटिव मोस्टली लेते हैं व्हेन इट इज मेजर्ड इन द एंटी क्लॉकवाइज सेंस, और क्लॉकवाइज एंगल को हम लोग नेगेटिव में लिखते हैं. 30 डिग्री इधर भी हो सकता था, इधर भी. अगर इधर होता तो ये क्लॉकवाइज मेजर होता तो इसको हम -30 डिग्री बोलते हैं. एंटी क्लॉकवाइज मेजर हो रहा है तो हम पॉजिटिव में लेते हैं. व्हाट डिड आई से? एंगल मेजर्ड इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव एंड इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन इट इज नेगेटिव.
So because the vector P is making an angle 30 degree with positive x axis, so two situations are this one or the downward direction. But as it is plus 30, the direction is anti-clock. So this is the vector P. This is the y axis because the vector is lying in the xy plane. So it can have two components, one in this direction, that is px भी बोल सकते हो, x component of P, और एक इस direction में, that will be pointing in this direction और x component इस direction में. तो अगर हम x component को बेटा px बोलते हैं और y component को अगर py बोलते हैं, तो what is given to us कि a vector P is inclined at 30 degree positive in the xy plane. Find the magnitude of P vector and its y component. ठीक है, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ये हमको निकालना है. वन मोर थिंग इज रिक्वायर्ड इन दिस क्वेश्चन विच आई हैवंट गिव यू. द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कॉम्पोनेंट, राइट दैट पार्ट आल्सो. मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कॉम्पोनेंट इज लेट अस से 10 यूनिट्स. एक्स कॉम्पोनेंट का मैग्नीट्यूड 10 यूनिट्स दिया हुआ. मतलब क्या हो गया बेटा, क्वेश्चन थोड़ा सा रेक्टिफाई कर लेना, एक पार्ट हम मिस कर गए थे. इट इज ऑल्सो गिवन कि द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कॉम्पोनेंट इज 10 यूनिट. मतलब कि पी एक्स का वैल्यू 10 दिया हुआ. क्लियर? अब पी एक्स क्या होगा, पी कॉस 30 होगा. पी का पी मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ पी. सो पी कॉस 30 इज गिवन एज 10. That means P times of root 3 by 2 is equal to 10. So magnitude of P comes out to be 20 by root 3. So this is the magnitude of P vector. इसका magnitude मतलब length of this line, उसी का cos. So P cos 30. P cos 30 is 10. P into root 3 by 2 is 10 और P can be written as 20 by root 3. तो ये हो गया हमारा magnitude of P. It is also asked to find its y component. तो अब क्योंकि बेटा हमको P निकल गया है, तो P y को हम क्या लिखेंगे, ये P cos थीटा था तो ये P sin थीटा होगा. So it will be P times of sin 30 degree. Magnitude of P is 20 by root 3 into sin 30, that is given by half. So your answer is 10 by root 3. So this is the answer to this question. Clear है? So in this form we can write down what are the results. Okay? Okay. So in the next class we will take some more examples regarding the vectors with the topics which we will be studying further. Okay? Thank you.